हेलो एवरीवन। सो आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ, द वीपीएन। सो इस सीरीज में मैं आपको पूरा वीपीएन के बारे में बताऊंगा, फ्रॉम जीरो टू the troubleshooting level, zero to the understanding the VPN, understanding the VPN concept, the configuration the VPN, configuring the site-to-site VPN, and I will show you some example on the live network as well. So let's start with VPN. I will create a 10-15 lecture on the VPN only. So let's start with VPN. What is the VPN and why we use them? What is the benefit we get from VPN? अगर VPN की बात करें, this is most fascinating technology. Let's say मुझे ये काम करते हुए लगभग अराउंड 10 ईयर हो गए हैं। अगर 10 ईयर में मुझे ये चूज करने को बोले कि द मोस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो उनमें से एक वन ऑफ दैट वुड बी ए VPN. Okay, because VPN solve a lot of problems. It solve a lot of problems for the customer, for the companies. It save the cost. Okay, what is the aim of the networking, or what is the aim of the technology, is the saving the cost, and VPN does that. Okay, so let's start with VPN. And okay, first of all, what is the VPN? VPN is virtual private network. This is a simple definition, but I will tell you something more than this definition. Okay, so let's say you have a computer. Let's say just okay. Let's say you have a one computer sitting here, and this computer is connected to your router, and the router is connected to your another PC. Let's see, it's another router, and that router is connected to another PC. This is the whole area is the internet. ओके, ये अगर ये आप मान लो जयपुर में है, ये दिल्ली में मान लो, या कनाडा में मान लो, कनाडा में, so they can talk each other without any issues. They can talk, okay, as long as you are not sending a confidential information across the internet. What is the issue here? The issue is here the transport protocol we use to the data from here to here is we use IP. Okay, and IP does not have any kind of type security. Internet protocol. Okay, IPv4 internet protocol, and this protocol does not have any sort of a security. It's sent in clear text over here, and it's itself doesn't provide any kind of type security. So internet everyone is evil. They are watching your traffic every time, the words you are sending across the internet. So that's the issue. What we can do here? Okay, the first thing, you can bought a private circuit. Okay, let's say one router here, one router here, that one PC connected here, and the same scenario. Okay, here is the internet, whole internet. तो आप क्या कहोगे कि भाई ये राउटर है, ये राउटर ये मेरा जयपुर में है और ये कनाडा में है, तो क्या होगा? आप बोलो आईएसपी के पास जाओ और बोलो कि मुझे एक प्राइवेट सर्किट चाहिए। सो दे विल गिव यू प्राइवेट सर्किट। अब आप क्या होंगे, आईएसपी आपको प्राइवेट सर्किट दे देगी, और यहाँ पे भी आपको आईएस वो प्राइवेट सर्किट दे देगी। आईएसपी के पास पूरा नेटवर्क होता है एंड टू एंड, या वो किसी से कोऑर्डिनेट करके करो या कैसे भी करो, आपको मतलब प्राइवेट सर्किट दे देगी। अब क्या करेगी? अब आप जब डेटा जयपुर से कनाडा ट्रांसफर करते हो, यू कैन ट्रांसफर इजीली. Okay, there is no issues with that. Even you do not put a security, that's fine, because now your data is not being, अब आपका जो डेटा है ना, वो इंटरनेट
कि जो बाकी यूजर है वो नहीं देख सकते, क्योंकि आईएसपी ने आपको क्या, आईएसपी से आपने क्या लिया है सर्विस प्रोवाइडर ने, प्राइवेट सर्किट लिया है। प्राइवेट सर्किट जैसे आपने नाम सुना होगा ना, एमपीएलएस, एक सर्किट है एमपीएलएस। या एमपीएलएस से पहले चलता था फ्रेम रिले, फ्रेम रिले से पहले चलता था एटीएम। दीज आर क्या है, प्राइवेट सर्किट है। एक अभी जो सारी जगह अवेलेबल नहीं होता, वो एक होता है मेट्रो इथरनेट, मेट्रो इथरनेट। ये क्या है, प्राइवेट सर्किट है। ये आपको आपको कनेक्शन देंगे और आपकी केबल वो आपके लिए डेडिकेटेड रहेगी, उसमें पब्लिक इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर आप मॉडेम से आप कनेक्शन लेते हो तो आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप इंटरनेट, एवरीवन कैन एक्सेस द इंटरनेट, ओके। सो प्राइवेट सर्किट में ऐसा नहीं होता। आईएसपी क्या करेगी, आपके लिए एक अलग सर्किट, आपके लिए अलग केबल बिछा देगी यहाँ से लेके यहाँ तक। सो यू कैन ट्रांसफर privately your data from Jaipur to Canada, okay, without any issue. But if we do that, let's say if we do that, how much cost it involve, okay? आप कनेक्शन लेते हो जयपुर में, अगर मॉडेम का कनेक्शन लेते हो तो कितने पैसे लगते हैं? 700 रुपये पर मंथ। ओके, प्राइवेट सर्किट लोगे तो इट कॉस्ट वुड बी 50,000 अराउंड पर मंथ, ओके। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस, ओके, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज ह्यूज डिफरेंस। सो मैंने अगर आपको शुरुआत में बोला था ना, वीपीएन सेव द कॉस्ट, हाउ? अब नाउ लेट्स गो टू द टर्म वीपीएन, ओके। सो जस्ट लेट मी erase there this। अभी तक जो है ना, प्राइवेट कनेक्शन से जा सकते हैं, हमारा डेटा कहीं पे इंटरमिंगल नहीं होगा पब्लिक के साथ, और हम प्राइवेट आईपी अक्रॉस भेज सकते हैं थ्रू प्राइवेट नेटवर्क एमपीएलएस। अगर आप कभी एमपीएलएस पे काम किया तो एमपीएलएस में आप प्राइवेट आईपी पिंग कर सकते हो, बिकॉज दैट इज ए डेडिकेटेड फॉर यू। आईएसपी अपनी साइड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करती है, कुछ अपनी साइड करना पड़ता है हमें एमपीएलएस के लिए, वो भी कभी देखेंगे तो। अब वीपीएन क्या है, क्या है? इसमें हमने समझा कि भाई हाँ, अगर हमने इंटरनेट का कनेक्शन लिया तो सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर इंटरनेट के थ्रू जाएगा तो एवरीवन कैन वॉच, अगर प्राइवेट सर्किट लें तो दैट इज कॉस्ट इज हायर। सो then the VPN appear, okay, this is the technology save us, okay। VPN नेटवर्क का क्या मतलब होता है? लेट्स ब्रेक दिस नेटवर्क टर्म, लेट्स ब्रेक दिस टर्म एंड से नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? Network is something which allow us to communicate to host to device. It make a path. Okay, network is a creating a path. Okay, let's say same the example, router and one computer. Okay, what is the network doing here? It a creating path between here to here. This is the network. Okay, the network the job of the network is creating path from source to destination. That's the job of network. Now let's go to virtual network। नेटवर्क क्या है समझ में आ गया? अब चलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है नेटवर्क तो है, ओके, लेकिन दैट इज अ वर्चुअल। जैसे आप जैसे कनेक्ट करते हो, लेट्स से वर्चुअल का मतलब है द नेटवर्क है लेकिन आपके वर्चुअल है, दैट नॉट इज फिजिकली एग्जिस्ट, ओके। लेट्स से दिस कंप्यूटर मॉडेम कनेक्शन है, ये आपका मॉडेम है एंड ये आपका इंटरनेट है, ओके। ये उनके पास भी मॉडेम है और ये मॉडेम है या राउटर है, ये उनके पास कंप्यूटर है, ठीक है। अब क्या करेगा वर्चुअल? वर्चुअल बना देगा। प्राइवेट सर्किट में तो क्या होगा, प्राइवेट आपकी फिजिकल लाइन खींचनी पड़ेगी, ओके, फिजिकल लाइन। नाउ क्या करेगा वीपीएन, ये आपकी वर्चुअल लाइन खींचेगा, वर्चुअल पाइप, ओके, दैट इज ए वर्चुअल।
ताकि कोई दूसरा इंटरसेप्ट ना कर सके। थर्ड, प्राइवेट, दिस नेटवर्क which is virtual or this network virtual and private. You are only owner of this network. Okay, no one will intercept. Even someone grab this data, that person will not be able to understand that data, that what is in the data without having the key. Okay, that's the beauty of VPN. So that's the reason we use VPN. I hope the आपको basic idea लग गया होगा कि भाई what is the VPN. So this is creating a virtual path between this network to this network. This virtual path is a private. This is only be, ये आप नेटवर्क तभी देख सकते हो जब आपके पास की होगी। वीपीएन किस में डील करता है? की में। ओके, ओके, that's all for now. We will meet you in the next lecture. Thank you.